But I'm wanting to tell you कि जब वर्ल्ड वॉर वन फिनिश हुई तो रशिया में से जार्स को निकाल दिया एंड कम्युनिज्म आ गई। अब चाइना तो एक अपनी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन में से गुजर रहा था, अब वहाँ से कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर जो कम्युनिस्ट थे वो खड़े होने शुरू हो गए एंड दे स्टार्टेड लाइक एक पॉलिटिकल जो आपको कहते हैं ना वो शुरू हो गए वहाँ पे गेम। लेकिन चाइना में दो कम्युनिस्ट पार्टीज थी, एक तो थी KMT। KMT वाज एक्चुअली US बैक्ड एंड उसका जो स्टेशन था वो मतलब जापान था, और जो CPC थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो रशिया बैक थी, और उसकी जो भी फंडिंग सपोर्ट और हेडक्वार्टर्स कह लो जो भी चीज़ वो रशिया से इधर आती थी। नाउ व्हाट हैपेंड वाज के ये दोनों जो पार्टीज थी ना ये बहुत स्ट्रांग थी, ये साउथ की तरफ से और ये इधर की तरफ से वेस्ट की तरफ से, एंड दे वर एक्चुअली फाइटिंग। इन्होंने बहुत सारे साल आपस में जंग करते रहे। लॉन्ग मार्च भी जो है वो भी इसी का एक हिस्सा है। लॉन्ग मार्च पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, इट्स लाइक अ थिंग इन पाकिस्तान। Tell us a little bit about Long March. Long March is Mao Zedong. Mao Zedong. Was the head of the CPC, which was backed by Russia. But Mao Zedong comes after the World War II. Yes. Yes, and before not actually not after World War II. World War II के फिनिश होने के तो फौरन बाद इन लोगों को आज़ादियाँ मिल गई थी ना, उससे बहुत पहले 30-40 years की इनकी स्ट्रगल है विद कम्युनिज्म एंड विद ईच अदर एंड फॉर द स्ट्रगल फॉर दिस इंडिपेंडेंस। एक्चुअली जो KMT थी ना जो US बैक थी वो पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड दे वर द वंस हु डिफीटेड द किंग डायनेस्टी को उन्होंने रिमूव किया एंड दे गॉट इनटू पावर एंड दे रूल्ड फॉर समथिंग लाइक 20-23 years। और दैट्स द रीजन कि US was really with them ना। they thought कि चाइना जो है वो KMT के पास ही आएगा, लेकिन हुआ ये कि with the passage of time Russian CPC became stronger and stronger and with Mao Zedong and they did this long march and they defeated the KMT. They had to run away. They flew into Taiwan. There they declared the ROC Republic of China and they kept this thing कि हम ये पूरा चाइना हमारा है और हमें फॉल्सफुली निकाला गया है। जबकि CPC जो कि रशियन बैक थी that became totally empowered in China and they declared in 1949 like Pakistan तो independent हुआ 47 में, they got their independence, they declared their independence in 1949 under the CPC Mao Zedong। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज प्रॉब्लम इसलिए भी हुई बिकॉज UN तो बन चुका था ना 45 में, यूनाइटेड नेशंस बन चुका था, और बिकॉज द US वर थिंकिंग कि KMT इज गोइंग टू विन, चाइना इज गोइंग टू बी अ प्रो US कंट्री, तो उसको UN के अंदर वीटो पावर मतलब दे दी, सिक्योरिटी काउंसिल में का मेंबर बना दिया चाइना को, ROC को। और अब चाइना कह रहे हैं कि वी आर द रियल चाइना, वी आर गोइंग टू बी इन द सिक्योरिटी काउंसिल। और ये चपकलिश या ये जो थी चीज़, इट केप्ट ऑन गोइंग लाइक दिस टिल 1971 एंड इन 1971 US डिसाइडेड कि नहीं हम इनके साथ रिकनसाइल करते हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंड के यू नो इन द वर्ल्ड वॉर II जापान को डिस्ट्रॉय कर दिया था इन्होंने एंड US की कॉलोनी बन गया था प्रैक्टिकली स्पीकिंग। वैसे तो उसका किंग को उन्होंने रखा सिम्बॉलिकली, बट वहाँ पर दे वर नॉट अलाउड टू मेक देयर ओन मिलिट्री, उनकी कोई आर्मी नहीं थी, और दे वर टोटली लाइक अंडर द रूल ऑफ द US। और US ने उनको बोला कि आप जो मीजी टाइम की जो इंडस्ट्रीज है उनको रिवाइव करो एंड वी विल बैक यू, एंड और वहाँ पे सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, बिकॉज द US वांटेड to have their stronghold in China, sorry in Asia। तो एशिया में वो उनका टारगेट था कि जापान को, वियतनाम को ये अपने वो क्या उसको कहते हैं, वियतनाम वॉर भी स्टार्ट हो गई थी। बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस एरा, आई स्टिल वांटेड टू से a few things about Mao Zedong. Was Mao Zedong
good for China or was he bad for China? It's like a real debate, but from his personality and from the person that seems ke Long March, he walked a long while and he made headlines. And he always presented himself as a guy who's very physically fit. One time they said he swam across the river at a pace which was like a world record, and he had those headlines coming in all the time. But actually, he was a communist, and his country was suffering from a famine at the time as well. So, what sort of matlab ke, is China so successful because they saw the era of Mao Zedong and they realized that this is like way too far of communism? Yeah, what was Mao Zedong thinking that he was doing the correct things for China, and in return, usse he made some bad decisions? What kind of a person was he? Well, इसमें ना you are talking about two different things. एक तो you are talking about communism. That is communism a good thing or a bad thing, and did the people of China suffer because of that? And the other thing is that जो उनका political एक struggle थी वो, because political struggle तो देखो, the whole world was almost colonized in everywhere. With the end of World War One और with और जो World War Two का जो टाइम था उसके से पहले और उसके बाद सारे दुनिया के जो मुल्क थे वहाँ पर सोशलिस्ट मूवमेंट्स आ रही थी एंड पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर their independence. ठीक है ना? तो China was doing the same thing. They wanted, the first thing a nation needs is their freedom. Everything else comes afterwards. उस freedom के लिए they can starve, they can fight wars, they can do anything. So in was that a struggle for independence. But they were already independent. China was already independent under, but the century of humiliation, you know, because and they their leave ports the were in those people's hands. Japan had made 2 wars. Russia had made a war. मतलब कि उनके कोई एक sovereign king की मैं आपको बता रहा हूँ, king जो dynasty थी वो बिल्कुल एक गुलाम बन करके, it was symbolically there, but it had no power of its own. तो the first struggle was struggle for independence. अब दूसरी बात है कि communism क्या as a philosophy is a good thing or a bad thing, that's a totally other debate, because capitalism में भी कुछ अच्छी बातें हैं, socialism, communism में भी कुछ अच्छी बातें हैं. They both have, मतलब जैसे democracy is actually something that came out of socialism, you know. तो एक अगर आप वन लाइनर्स दे रहे हो तो फिर आपके वन लाइनर्स तो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज कैपिटलिज्म कह रहा है कि जी फ्री मार्केट होनी चाहिए, अपनी ओनरशिप होनी चाहिए चीज़ों के ऊपर, तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग. इसी तरह से कम्युनिज्म या सोशलिज्म कह रहा है कि जी पावर लोगों के पास होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, रिसोर्सेज इवनली, अपॉर्चुनिटीज इवनली डिवाइड होनी. दैट्स नॉट अ बैड थिंग. द बैड थिंग्स आर दी ऑल दी अदर थिंग दैट कम विद दोज, विद दैट ड्रीम. वो एक ड्रीम के साथ कितना कुछ और एसोसिएट हो गया. फॉर एग्जाम्पल, जब रशिया के अंदर ज़ार को उन्होंने मार के कम्युनिज्म लेकर आए, तो उसके बाद वो उसका एक पार्ट होता है वैंगार्ड पार्टी. वैंगार्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेनेवर यू ब्रिंग सोशलिज्म और कम्युनिज्म इन अ न्यू प्लेस, तो द होल पॉपुलेशन डजंट अंडरस्टैंड दैट. तो पॉपुलेशन तो एजुकेटेड नहीं है, वो तो आपके साथ फौरी तौर पे नहीं मिल रही. तो उस वक्त तक के लिए, जब तक आपकी पॉपुलेशन को समझ आ जाए, तब तक आपकी एक पावर में वैंगार्ड पार्टी होती है जो कि आपको पावर में रखती है किसी भी सूरत में. उसके लिए उन्होंने रेड टेरर फैलाया था, यू नो, मिलियंस, दे किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल इन रशिया. ठीक है ना? तो व्हाट केम विद दैट ड्रीम, बात तो वो है ना. A lot of people died in Mao Zedong's era as well, because of hunger and because of poverty. Because of poverty and because of this communist policies. कुछ policies अच्छी हो गई, कुछ गलत निकल आई, ऐसा हुआ. लेकिन what I'm trying to tell you is, when you talk about communism या socialism, so there are good things in those dreams, but